Number 1. Which of the following best describe the nature of the Indian economy? Mixed economy, socialist economy, communist economy, capitalistic economy. Answer number A. Apanakara mixed economy. The economy of India is developing mixed economy with a notable public sector in strategic sector. It is the world's fifth largest economy by nominal GDP and third largest by purchasing power parity (PPP) on a per capita income basis. India ranked 141th by the GDP nominal and 119th by the GDP PPP. Question number 2. Which of the following economic activity employs the maximum number of people in India? Tourism, manufacturing, agriculture, mining. Answer of option C. Agriculture. Agriculture economic activity employs the maximum number of people in India. Which of the following come under the quaternary sector? Information technology, mining, manufacturing, fisheries. Answer of option A. Information technology. Quaternary jobs involve research and development. Example IT. Question number 4. The National Board for Micro, Small and Medium Enterprises meet once in a year. Dash month in a year. 2, 6, 3 or 9. Answer of option B. 6. The Minister of Micro, Small and Medium Enterprises meets once in a year, 6 months. This is a branch of the Government of India to administer and formulate law for the micro, small and medium enterprises in India. Question number 5. The Micro and Small and Medium Enterprises Development Act was passed in the year 2006, 4, 8 or 2. Answer of option A. 2006. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 Act was enacted with a view to facilitate the promotion and development of India. Question number 6. Who among the following is also known as the founder of microeconomics as a separate discipline? Adam Smith, Fisher Black, Robert Merton, John Keynes. Answer would be John Merton Keynes. John Merton Keynes is known as the founding father of microeconomics as a separate discipline. He was born on 5th June 1883 in Cambridge. Which of the following is not a primary activity? Agriculture, construction, mining, fishery. Answer will be construction. Construction is not a primary activity. Based on economic activity, how many sectors are there in Indian economy? 4, 3, 2, 5. Answer will be 3. There are 3 sectors in India economy. They are primary economy, secondary economy, and tertiary economy. In terms of operation, the Indian economy is divided into organized and unorganized, while for ownership it is divided into public sector and private sector. Question 9. What would be the investment of micro enterprises in plant and machinery manufacture sector? Between 25 lakh and 50 lakh, more than 50 lakh, not more than 25 lakh, more than 25 lakh. Answer option C. Not more than 25 lakh. The manufacturing sector enterprises having an investment not more than 25 lakh rupees in plant and machinery are called micro enterprises. And according to the MSME Act 2006, government has defined 2 types of enterprises: manufacturing enterprise and service enterprise. Which of the following is not a capital good? Tools, food and clothing, machine, truck. Answer will be food and clothing. Question number 11. Which economist developed an international trade theory in 1870 based on comparative advantage and specialization? Paul Krugman, Gary Becker, Milton Friedman, David Ricardo. Answer would be David Ricardo. David Ricardo developed the classical theory of the comparative advantage in 1870 to explain why countries engage in international trade even when one country's workers are more efficient at producing every single good than workers in other countries. Question number 12. Which of the following activity is also referred as the gold collar profession? Secondary, quaternary, primary, quinary. Answer will be quinary. Tertiary activity are classified into quaternary and quinary activity. Quinary is also known as gold collar professions.
Question number 13. In which year was the first industrial policy based on the mixed economy principle announcement in India? The policy clearly democrated the ideas of the operation of the public and private sector in 1959, 48, 50 or 62. Answer of आपको B 1948. In 1948, the first industrial policy was presented in the parliament by the industry minister Dr. Syama Prasad Mukherjee. The policy properly has a democratic between the ideas of the operation vis-a-vis the private and public sector in the country. Indian economy is called a mixed economy. Question number 14. Which of the following is working capital in the farming sector? Threshing machine, money, tractor, land. Answer will be money. Money is working capital in the farming sector. A simple measure of the total amount of liquidity available in the farm sector is working capital. Question number 15. In dash economy, all productive resources are owned and controlled by the government. Dual capitalist, mixed socialist. Answer option D, socialist. In socialist or centrally planned economies, the government own and control all productive resources for the benefit of society as well as a whole. Question number 16. John Macanicus, best known for his economic theory, Keynesian theory, hailed from which country? Sweden, Denmark, Australia, England. Answer option D, England. John Macanicus belongs to England. He also known as the father of microeconomics. Question number 17. Depreciation is an annual allowance for the wear and tear of dash, finished goods, capital goods, work in progress, land. Answer about capital goods. Depreciation is an annual allowance for wear and tear of the capital good. Question 18. Which of the following activity can be classified as a part of the secondary sector of economy? Legal consulting, tea plantation, farm equipment manufacturing, banking. Answer option C, farm equipment manufacturing. Secondary sector include manufacturing, electricity, gas and water supply and construction, which provide employment 16% of the worker. Question number 19. The mixed economy is presence of subsistence and commercial farming, coexistence of traditional and modern industries, a market system of resource allocation, commerce and trade in which free markets coexist with government intervention, presence of domestic and foreign investment. Answer option C. Explanation goes mixed economy is a market system of resource allocation, commerce and trade in which free markets coexist with government intervention. Last question. Which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individuals or businesses and the production of goods and services is based on supply and demand in the general market? Mixed economy, capitalistic economy, state economy or communist economy? Answer option B, capitalistic economy. Capitalism is an economic system which provides individual or business own capital goods. Capitalism is an economic system that focuses on a free market to determine the most efficient allocation of resources and sets price based upon supply and demand. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यंत स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जो थे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण एटा जदि आपण माने जदि OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर कर निश्चित भाव आपण मानक हेल्पफुल रहिबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब कर नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो देखिबा ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै छथि, प्रिपेयर करछने जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाव रे हे परछि। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल कने पड़बो गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कय गले
ଆପଣ ଇମେଜେସ୍ ଆଉ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଇମେଜ ରହିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଆକୁରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତା କଥା ଆମେ ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ମେମୋରି ବୁଷ୍ଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନେକର ସେନ୍ସସ୍ର ଗୋଟେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ OSSC ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରଫେସର ଲେଭେଲର ଥାନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ାର ଟିକେ ଲେଭେଲର ସେଇ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବନାନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବେ ନ କି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ପଚାରି ପାରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ 34ଟା ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ 92 ପେଜ୍ର ଟୋଟାଲ୍ 35ଟା ଚାପ୍ଟର ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ପଶୁଛି ଯେମିତି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଯେମିତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाइए एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाइए ओडिशा बेसिक इनफॉरमेशन पढ़ाई देछि आ जेतिकी बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड अछि माने कहया गले सब जाक चैप्टर गुडा पाखाबे 20 ରୁ 25 मिनट की 40 मिनट भीतर बहुत चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारची माने हला देखंतो एटी पूरा आपण जो देखिबे टोटल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटा रो वीडियो माने 15 घंटा रे आपण को पूरा चैप्टर सर जीव आपण पूरा मास्टर हे जिवे ओडिसा जिकरे कोनोसी भी आपण को गोटे मार्क कटिबनी हला काई ना एते डिटेल से बरे डिटेल देछि सब जिंस पैक्सा देछि सेकंड कथा करना हम बाखरे सब चैप्टर रो वीडियो अवेलेबल अछि हला तेणु आमे कोन करछु किछि फ्री सर्विस भी देछु किछि पेड सर्विस भी आमे रखिछु देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाउछनी आपण 50% आपण को एडवांस आपणकर एबे रहउची एडवांस जो मन पेमेंट करछनी 50% डिस्काउंट रहउची समरी नोट माने आपण चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले आपण संगे संगे आपण समरी नोट मिल जिवो ताको पढि देबे आपण बेस किछ पढिया दरकार नै डेली 12 टाइम सीक्यू 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढुची परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोछु ओडिसा 360 डिग्री ई-बुक गोटे फ्री रे आपण दोछु हला सेते आपणकर सेते सब जिंस रहिची जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस पर डेटा फ्री पोस्ट मिलुची 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे हम आपण को अपलोड कर दोछु सेटा प्राइवेट रहबो आपण को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नाही तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपन मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका हला 35 टंका माने गोटे छोटो छुआ मध्ये एटा अफोर्ड करि परिबो एमिति बहुत बडो जिंस नो सेकंड कथा 35 टंका नै कि मु बहुत बडो लोकहि जिबिनी काने एति परिश्रम करिया पडुचे से बहिटा फोटो उठाई हला परे तापर ताको पीडीएफ बना जिवो पीडीएफ बना पले विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करिके ताको बुझेइबो जणे हला तापर बाकी रहला तापण बुझे साइला परे आपन को क्विज दबो एते जिंस जणा करूची हला कारण भाबंतु आपन भाबिनो तो 35 चैप्टर रो आपन को जति आपन मिली गला आपन वीडियो मिली गला त गोटे वीडियो रो प्राइस केते पइला टंका तो आपन अपलोड कर परिबे हला तेनु मु बहुत जिंस किसी कहउनी हला देखंतो एठी आपनकर पका पके जोडा मो 7 घंटा वीडियो जडी सेते बहुत गुडिए फ्री चैप्टर भी अछि पेड चैप्टर भी अछि जो माने नै छै से माने पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख परचंदी हला आ आपण मान जो चाहेबे निश्चित भाबरे एटा को एक्सेस करि परिबे
मात्र 35 टंका आपण भाबंतु जे एटा आपण गले ओएसएससी जिले कामरे आसीबो अपकमिंग जेतिके रिक्रुटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह आपण ओडिसा निश्चित पड़िबो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले मते आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होय तनो 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करी मते 8993719022 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला परे आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज वीडियो जदि आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणिबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच which of the following is a tertiary economy activity एटा हमें अपन को लास्ट क्लास रे अपन को कमेंट सेक्शन अपन को क्वेश्चन ऑफ द डे रे देतिलु अपन मन कमेंट करिया पे कहतिलु आर आंसर जदि अपन मन जानछन एबे दियंतु नले आंसर दब अपन को बी ट्रेडिंग explanation कहूची trading is a tertiary economy activity. Tertiary activity include providing services such as trade, transport, financial operations, business services, personal services, accommodation and food services, activities, real estate, education, health, etc. Which पहले question number 2, an industrial economy is the best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the dash sector. Banking, secondary, tertiary, primary. Answer of apanakara B, secondary. An industrial economy is the best defined as the economy whose 50% or more produce value comes from the secondary sector. Question number 3, income and employment theory is the other name for which of the branch of economics? A, internal economics, public finance, macroeconomics. Answer of D, macroeconomics. Macroeconomics is the branch of the economics that studies the behavior and performance of an economy as a whole. It focuses on the aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and inflation. Question number 4, dash is defined as the study of the behavior of individual decision making units such as consumers, resources owner and farms. Microeconomics, health economics, econometrics. Option A of answer microeconomics. Microeconomics is a branch of economics that studies the behavior of individual and farms in making decisions regarding in the allocation of the scarce resource and the interactions among these individual and farms. Question number 5, the concept of wages, rent, interest and profit are studied under the which branch of economics? Macroeconomics, microeconomics, econometrics, health economics. Answer of B, microeconomics. पूर्व स्लाइड जो आंसरटा एक्सप्लेनेशन था एटा सेटा ही रहिछि आपण माने बुझिथिबे. Question number 6, people like small farmers and seasonal workers who regularly move in and out of poverty are categorized as occasionally poor, churning poor, always poor, usually poor. Answer आपन churning poor. Churning poor definition कहूची तो churning poor are those people who are go in and out of poverty. Example है farmers and seasonal workers. Question number 7, an unexpected rise in sale of product leads to planned accumulation of inventory, planned decumulation of inventory, unplanned decumulation of inventory, unplanned accumulation of inventory. Answer was C, unplanned decumulation of inventory. Which पहले? Question number 8, which of the following statement is related to positive economics? Inflation is better than deflation. Inequalities in the distribution of wealth and income should be reduced. More production of luxury goods is not good for a less developed country. An increase in money supply implies a price rise in an economy. Answer number D, an increase in money supply implies a price rise in economy. जदि आपनकर मनीटा जदि आपनकर राइज करूची ताहले आपनकर कोन इकोनॉमी रे भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आसीबो. एटा होची एक्सप्लेनेशन. तापर आसला क्वेश्चन 9, व्हिच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी डील विथ द डिप्लीशन of natural resources, stock and pollution which are a result of rapid economic development? Environmental economics, developmental economics, international economics or public economics. Answer of आपनकर ए environmental economics.
Environmental economy deal with the depletion of the natural resources, stock pollution, which are a result of rapid economic development. Question number 10. An economy in which both the private sector and the government are involved is known as a or an dash economy. एटा होची आपनकर mixed, blended, parallel or amalgam. Answer of आपनकर a mixed economy. An economy in which both the private sector and the government are involved is known as the mixed economy, and an Indian economy is a mixed form of economy. Question number 11. An monetary transport or kinds sent by migrants to their place of origin are called bills, drafts, remittance or payment. Answer of C, remittance. Remittances are usually understood as financial or in-kind transfer made by migrants to friends and relatives back in communities of origin. Question number 12. Which of the following formula related to monetary and liquidity aggregates is not correct? ଆପଣ ଏଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ. Option A, M4 is equal to M3 plus total deposit with post office saving organization excluding national saving certificate. M1 equal to currency notes plus coin plus demand deposit. M2 is equal to M1 plus saving deposit with post office saving bank. M3 is equal to M1 plus net time deposit of post savings. Answer about D. M3 is equal to एरा दीजिए बट आपनकर नॉट करेक्ट कोन आपन रेट आंसर होची M4 is equal to M3 plus total deposit with post office saving organization excluding national saving certificate. M1 is equal to currency notes plus coins demand deposit. M2 होची M1 plus saving deposit with post office saving. ये होची टोटल सिनेरियो एटा मन रखबे आपन माने ठीक अछि. ऑप्शन डी रॉन्ग थिला. 13 question. Which of the following concept implies that the sustainable development should take a holistic approach towards the notion of progression and give equal importance to non-economic aspects of well-being? GDP, GNP, GNH or the gross national happiness or NNP, net national product. आपनकर आंसर होगा C, gross national happiness. Gross national happiness is a term coined by His Majesty of the Fourth King of Bhutan, Jigme Singha Wanchung, in 1970s. The concept implies that the sustainable development should take a holistic approach towards the notion of the progress and give equal importance to a non-economic aspect of well-being. Question number 14. In the context of the economics, what does P stand for in EPF? Planning, profit, promotion, provident. अपना जान EPF फॉर्म ये होची D, provident. EPF stand for Employee Provident Fund. Employee Provident Fund EPF is retirement benefit scheme maintained by the Employees Provident Fund organization जोटा कि EPF पहुंचती. Question number 15. Which of the following is not important for individual health? Social equality, public cleanliness, harmony, public transport. Answer of public transport. Easy question data. Public transport is not important for individual health. Living a healthy lifestyle can help prevent chronic disease and long-term illness. Question number 16. Which of the following statement is not true about the Export-Import Bank of India? जोटा कि स्टेट बैंक कौन सुने? और ऑप्शन पढ़ो. A. Its main objective is to provide financial assistance to promote Indian exports. It is a premier export financial institution of India. The bank provides assistance in the helping Indian firms in their globalization efforts. Option D. It was established in 2014 under the Export-Import Bank of India Act. Answer number D. It was established in 2014 under the Export-Import Bank of India Act. Okay. Question number 17. Which of the following is not a public sector bank? Jammu Kashmir Bank Limited, Canara Bank, State Bank of India, IndusInd Bank. Our answer is D, IndusInd Bank. IndusInd Bank is not a public sector bank, it's a private sector bank. Okay. The currency printing press of India is not located in Devas, Kochi, Mysore, Salboni. Answer is B, Kochi. केमती ना दिस करेंसी नोट प्रेस जोटे कि नासिक अछि महाराष्ट्र रे बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश रे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक सालबनी अछि बट आपण कोच्चि रे नाही.
Question number 19. Which of the following is not a national bank? South Indian Bank, Syndicate Bank, Canara Bank, or BJ Bank? Answer above A. South Indian Bank. South Indian Bank is not a nationalized bank. It is a private sector bank. The Banking Regulation Act was passed in India in 1949, 74, 65, or 51. Answer above A. 1949. The Banking Regulation Act 1949 is a legislation in the India that regulates all the banking companies in India, passed as the Banking Companies Act 1949. It came into force on 16 March 1949 and changed the Banking Regulation Act 1949 from 1st March 1966. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोथे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण को पई एडा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मानको हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो तो देखिबा ए बहिर गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे परछि। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल किना पड़िबोनी गोटे बहिरे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाव में अच्छी जमती आप गोटे जहाँ गोटे इमेज रहा बहुत भल भाव से दर्शाई आकुरेट फैक्ट्स अच्छी माने कौन पर केमती कौन आसला कौन पर केमती कौन आसला से बहुत भल भाव देइछंती। एग्जाम हॉल डिमांड कौन जो जिनस रखी सेठी एग्जाम हॉल ये जिनस बहुत थर पड़ी से माने गोटे सूची देइछन तथा हम बार बार तक रिवीजन करिवार अछि। तबरे मेमोरी बूस्टर माने आपनकर ए जो गोटे मानकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले सेतेरे कौन कौन पॉइंट बहुत जिन बाहर ताको हमको मन रखे पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी। ता सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछन। तेणु ए जिनस हम 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछन किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल थांती हला से माने उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, आपनकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला। तेणु से मानकर मुंड को जहाँ आसीबो से माने क्वेश्चन बनेबे न कि से माने देखिबे जे 10th स्टैंडर्ड कोन आसीबो बोली हला। तेणु से माने बहुत जिंस पचारि पाते क्वेश्चन। तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गले आप 34टा चैप्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जदि कहले 92 पेज टोटल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी। आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जेमती सिलेबस आपनकर देइछि हला। सेकंड कहया को गले आपनकर कोन ना मु आपनको एक कंटेंट रो बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देइछि हला। जेमती मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देइछि, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देइछि, एनिमल हस्बेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देइछि, कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई छि, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाई छि, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाई छि एवं ओडिशा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़े दै छि। आ जेति कि बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड अछि माने कया गले सब जाक चैप्टर उडा पाखाबे 20 रो 25 मिनिट कि 40 मिनिट भीतर बहुत चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारची माने हला। देखंदो एटी पूरा आपण जो देखिबे टोटल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटा रो वीडियो माने 15 घंटा रे आपण को पूरा चैप्टर सर जीव आपण पूरा मास्टर हे जिवे ओडिसा जिकरे कोनोसी भी आपण को गोटे मार्क कटिबनी हला। काहे ना एते डिटेल से बरे डिटेल देइछि सब जिंस पैक्सा देइछि। सेकंड कथा करना हम बाखरे सब चैप्टर रो वीडियो अवेलेबल अछि हला। तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किछि पेड सर्विस भी आम रखीचु। देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाउछनी आपण 50% आपण को एडवांस आपणकर एबे रहउची एडवांस जो मन पेमेंट करजनी 50% डिस्काउंट रहउची। समरी नोट माने आपण चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले आपण संगे संगे आपण समरी नोट मिल जिवो ताको पढि देबे आपण बेस किछ पढिया दरकार नै। डेली 12 टाइम MCQ 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढु जी परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोचु। ओडिशा
360 डिग्री ई-बुक गोटे फ्री आपन दउछु हला सेते आपनकर सेते सब जिंस रहिछि जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस पर डेटा फ्री पोस्ट मिलछि 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे हम आपन को अपलोड कर दउछु सेटा प्राइवेट रहबो आपन को जो माने एरा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नाही तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपन को मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका हला 35 टंका माने गोटे छोटो छुआ मध्यटा अफोर्ड करि परिबो एमिति बहुत बडो जिंस नो सेकंड कथा 35 टंका ने कि मु बहुत बडो लोक हि जिबिनी काने एति परिश्रम करिया पडुचे से बईटा फोटो उठाए हला पर तापर ताको पीडीएफ बना जिवो पीडीएफ बना पले विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करिके ताको बुझेइबो जणे हला तापर बाकी रहला तापन बुझी साइला पर आपन को क्विज दबो एते जिंस जणा करूची हला कारण भाबंतु आपन भाबिनो तो 35 चैप्टर रो आपन को जति आपन मिली गला आपन वीडियो मिली गला तो गुटे वीडियो रो प्राइस केते पइला टंकाटे तो आपन अपलोड कर परिबे हला तनो मु बहुत जिंस किसी कहउनी हला देखंतो एठी आपन कर पका पके जोडा मु 7 घंटा वीडियो जडी से बहुत गुडी फ्री चैप्टर भी अछि पेड चैप्टर भी अछि जो माने नै छै से माने पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख परचंदी हला आ आपण मान जो चाहेबे निश्चित भाबरे एटा को एक्सेस करि परिबे मात्र 35 टंका आपण भाबंतुन जे एटा आपण गले ओएसएससी जिले काम रे आसीबो अपकमिंग जेति रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित भाबरे पड़िबो 35 टंका इज नॉट अ वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले म्हणजे आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होय तनो 35 टंका इज नॉट अ बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करि मते 8993719011 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला पर आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज रो वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच Number 1 the interest rate charged by banks on short term to their largest most secure and most credit worthy customer is called prime lending rate authorized rate discount rate variable rate अपना आंसर अब prime lending rate the interest rate that banks charge to their most credit worthy customer for a short term loan is called the prime rate prime lending rate or prime interest rate Question 2 cash reserve ratio जोटा कि हमें CRR को is calculated as a percentage of each bank's rate of inflation net demand and time liabilities credit growth saving of customers answer अब अपन B net demand and time liabilities The cash reserve ratio CRR can be calculated as a percentage of bank's net demand and time liabilities NDTL. The NDTL includes all deposit held by a bank. Question number 3. In the context of the banking sector of India, what is the full form of IMPS? Instant Payment Service, Instant Payment Sector, Immediate Payment Sector, Immediate Payment Service. Answer अपन कर D. Immediate Payment Service. IMPS stand for Immediate Payment Service. It is a service that allow customer to transfer money between bank and prepaid payment instrument issuer PPIs in India. IMPS is available 24/7 and can be used via mobile, internet, SMS or ATMs. Question number 4. Which of the following terms refer to the running down or payment of a loan is installments, discounted cash flow, credit creation, all or amortization. Answer अपन गटी amortization. The term that refer to the running down or payment of a loan installment is amortization. Question number 5. Which of the following bank was authorized to issue electoral bonds? State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Corporation Bank. Answer अपन करे State Bank of India. Okay. Question number 6. In which year was the State Financial Corporation Act passed? The Act provided for the establishment of the State Financial Corporations. 1972, 83, 51 or 47. Answer अपन कर C 1951.
The State Financial Corporation Act was passed in 1951 on October 31. It is Act number 63 of 1951. The Act came into force on August 1st, 1952. Question number 7. Which committee was appointed to give a detailed report on the non-performing asset of the public sector banks? Mangalam Committee, Sri Krishna Committee, Selvam Committee, Mandal Committee. Answer apanakara C, Selvam Committee. Selvam Committee report submitted in 1998 on the NPS of the public sector banks suggested abbreviation cancellation under the Attribution Act 1996 as a effective tool. Question number 8. Which of the following is defined as the proportion of high liquid asset held by financial institutions to ensure their ongoing ability to meet short-term obligations? Liquid coverage ratio, base rate, statutory ratio, cash reserve ratio. Answer apanakara liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio is defined as the proportion of highly liquid asset held by the financial institution to ensure their ongoing ability to meet short-term obligations. Question 9. The responsibility of regulating and supervising primary urban cooperative banks, which are popularly known as urban cooperative banks (UCBs), is vested with which of the following? The Department of Non-Banking, the Urban Banks Department of the Reserve Bank of India, State Cooperative Banks, or the Department of Cooperative Society of the Reserve Bank of India. Answer apanakara B, the Urban Banks Department of the Reserve Bank of India. The Urban Banks Development of the Reserve Bank of India. Urban Banks Development functions in close coordination with other regulators via RCS and the CRCS. The Banking Regulation Act 1949 AACS provided for submission of periodical return of UCBs to the Reserve Bank of India. Question number 10. The rate of interest on which commercial banks borrow money from RBI to meet their short-term credit needs is known as subprime lending rate, statutory lending rate, primary lending rate, or bank rate. Answer D, bank rate. The rate of interest on which commercial banks borrow money from RBI to meet their short-term credit needs known as bank rate. Question number 11. In the context of the banking system in India, what does IFSC stand for? Indian Financial Statistical Code, Indian Functional System Calculation, Indian Financial System Code, and Indian Financial Social Code. Answer C, Indian Financial System Code. ठीक है जी. Question number 12. With reference to the banking system of India, what does NEFT stand for? National Equity Finance Transaction, National Equity Funds Transaction, National Electronic Finance Transfer, National Electronic Fund Transfer. Answer आपनकर D, National Electronic Fund Transfer. ठीक है जी. Question number 13. In the context of the banking system in India, what is the problem of RTGS? Real-time gross settlement, random time gross settlement, real-time gain settlement, real-time gain settlement. आंसर अपन करें real-time gross settlement. ठीक है जी. Question number 15. RBI does not transfer or act the business of which of the following state governments? Bihar, Jammu Kashmir, Telangana, Meghalaya. Answer अपन करें Jammu Kashmir. The state government transactions are carried out by RBI in terms of the agreement entered into the state governments in terms of Section 21A of the Act. As of now, such agreements exist between RBI and all the state government except the government of Jammu Kashmir and Sikkim. Question number 15. How many digits are there on a debit card? 15, 16, 14, 17. सब आपन करो B16. एक debit card number has 16 digits. It's usually printed on the front of the card. अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ତେଣୁ ଏଠୁ अपन ଜାଣି ପାଇଲେ टोटल 4 4 4 5 16 टोटल 16 टा कार्ड थाउची 16 टा डिजिट थाउची. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. रानी का भाव motif is present on which of the currency note? 50, 20, 200, 10 or 100 rupees note. आंसर अपन कर डी 100 rupees note. देखो ये रानी का भाव रहुचे
ओरिजिनल पिक्चर आउ ताको सेही जिनसटा को ही प्रिंटेड करा आइछ हमरा 100 रुपीस नोट रे ठीक अछि एटा मन रखिबे क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल बिल्डिंग मनी मशीन टूल आंसर आपन का मनी ठीक अछि मनी हो जे आपन वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर 18 India's foreign reserve does not consist of which of the following gold carbon bond reserve trench position RTP special drawing right STR आंसर आपन का P carbon bonds India's foreign reserve does not consist of carbon bond okay which of them is not a nationalized bank Allahabad bank Bandhan bank Punjab national bank or Dena bank answer of open color B Bandhan bank Bandhan bank is not a nationalized bank it is a private bank okay question number 20 last question who is the founder of Indian Overseas Bank M Chindambaram Chettiar B G Kale Devankar Nanji Rana Kapoor answer open color A M Chindambaram Chettiar Indian Overseas Bank IOB headquartered in Chennai recently commemorated its 89th foundation day. It was registered as a joint stock bank of the November 20, 1936 in Madras. In 1937, MCTM Chidambaram Chettiar founded the bank to promote the overseas banking and facilitate foreign exchange operations. हेलो डियर फ्रेंड्स बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत आज हम देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोते कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक हेरिटेज एंड कल्चर रही छी आपण को पई एडा जदी आपण माने जदी OSSC OSSSC OPSC OUSSC टीचिंग जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मन को हेल्पफुल रहइबो ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब कर नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलु छी चलो देखिबा ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै छथि प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे परछि ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल केना पड़िबो गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाबरे अछि जेमति आपण गोटे जहा गोटे इमेज रहला ताको बहुत भलो भाबे समान दर्शाई छथि जे गोटे एक्यूरेट फैक्ट्स अछि माने कोन पर केमति कोन आसला कोन पर केमति कोन आसला से बहुत भलो भाबे दिछथि एग्जाम हॉल डिमांड कोन जो जिंस रखि छथि सेठी एग्जाम हॉल ए जिंस बहुत थोर पढितबे से माने गोटे सोची दिछन त हम बार बार तो रिवीजन करिवार अछि तबरे मेमोरी बूस्टर माने आपण ए जो गोटे मनकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले सेतेरे कोन कोन पॉइंट बहुत जिन बाहर ताको हमको मन रखे पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी ता सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछन तेणु ए जिंस हमेशा 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछन किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल थांती हला से माने उत्कल यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी आपनकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला तेणु से मानकर मन को जहाँ आसीबो से माने क्वेश्चन बनेबे न कि से माने देखिबे जे 10th स्टैंडर्ड रो कोन आसीबो बोली हला तेणु से माने बहुत जिंस पचारि पांते क्वेश्चन तेणु आमे जे देखिबा यार कंटेंट लिस्टा कया गले आपन को 34 टा चैप्टर हला डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जदी कहले 92 पेज टोटल 35 टा चैप्टर अवेलेबल अछि आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पसुची जेमते सिलेबस आपनकर देइची हला सेकंड कया को गले आपनकर कोन ना मु आपनको एक कंटेंट रो बहुत कंटेंट फ्री रे पढे देइची हला जेमते मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढे देइची नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढे देइची एनिमल हस्बेंडरी ओडिशा एटा पढे देइची कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढाई छि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ओडिशा पढाई जाई छि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढाई जाई छि एवं ओडिशा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढाई दै छि आ जेति कि बाकी रो लखि चैप्टर सेटा सब पेड अछि माने कया गले सब जाक चैप्टर उडा पाखा बे 20 रो 25 मिनिट की 40 मिनिट भीतर बहुत
चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारजिया माने हला देखो ये पूरा आप जो देखिए टोटाल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो माने 15 घंटे आपण पूरा चैप्टर सरीज आप पूरा मास्टर हो ओडिशा जिके कौन भी आप गोटे मार्क कटबनी है कहीं एत डिटेल से बरे डिटेल देछि सब जिन पैसा देछि सेकंड कथा करना आम पाखे सब चैप्टर वीडियो अवेलेबल अच्छी है तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किसी पेड सर्विस भी आम रखीचु देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँ आप 50% आपन को एडवांस आपणकर ए रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे समरी नोट माने अपन चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले अपन संगे संगे अपन समरी नोट मिल जाए पढ़ी देवे आप बेस पढ़ा दरकार नहीं डेली 12 MCQ 35 डेज माने 420 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पड़ुची परीक्षा से लेवल क्वेश्चन आम दौचु ओडिशा 360 डिग्री ई बुक गोटे फ्री आपको दौचु है सब जिन रही जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहूँ 50 रुपीज बट एटा फ्री कॉस्ट मिलूँ 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे आम आपको अपलोड कर दौचु सेटा प्राइवेट रहिबो आपन को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नहीं तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका है 35 टंका माने गोटे छोट छुआ अफोर्ड कर एमती बहुत बड़ जिनस नुह सेकंड कथा 35 टंका नहीं कि मुझे बहुत बड़ लोक होनी कहीं एति परिश्रम करा पड़ू से बईटा फोटो उठाओ फोटो उठाई पीडीएफ बना पीडीएफ बना पारे विभिन्न सफ्टवेयर यूज करके बुझेब जड़े है बाकी रहा बुझे सारापर आपको क्विज दब एत जिन जड़े करुच्ची है तेना भावतु भावी नि 35 चैप्टर जदि आप मिलगला आप वीडियो मिलगला तो गोटे वीडियो प्राइस के पड़ा टंका पड़ा टंका तो आप अपलोड करेंगे है तेणु मुझे बहुत जिन कहूनी है देखो ये आपंकर पाखापाखि जोटा मुझे 7 घंटार वीडियो छाड़ी बहुत गुड़िए फ्री चैप्टर भी अच्छी पेड चैप्टर भी अच्छी जो मैंने नहीं पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख पार्टी है आपण जो चाहिए निश्चित भाव को एक्सेस करें मात्र 35 टंका आपण भावतु जे ओएसएससी जिले कम आसो अपकमिंग जी रिक्रुटमेंट आसो गवर्नमेंट सब जगह ओडिशा निश्चित भाव पड़ो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आप गोटे एवं बाहर मोमो खाई कि गुपचुप खाई कि जहाँ खाई आप 35 टंका भी अधिक खर्च हो तेणु 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आपने क्यूआर कोड स्कान कर 8993719044 नंबर मत व्हाट्सएप करेंगे व्हाट्सएप कले मुझे डिटेल्स क्रॉस चेक कलापर आपण मेल आईडी मांगी आपको वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज वीडियो जदि आपन भल लागला निश्चित भाव आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणबे आपन मतामत कोन थैंक यू सो मच Who decides repo rate, reserve repo rate and bank rate? SEBI, NABARD, Reserve Bank of India or SEBI, SBI? Answer of आपन C, Reserve Bank of India. Repo and reserve repo rates are decided by the Monetary Policy Committee, जोटा कि MPC of RBI. A bank rate is the interest rate at which a nation's central bank lends money to domestic bank, often in the form of the very short-term loans. Question number 2: Which central agency issues currency notes on behalf of the central government? IRDA, SEBI, Reserve Bank of India, State Bank of India. Answer आपनकर अब C, Reserve Bank of India. In terms of Section 22 of the Act, a Reserve Bank has the sole right to issue banknote in India. Section 25 states that the design, form and material of bank notes shall be such as may be approved by the central government after consideration of the recommendations made by the Central Board of RBI. Question number 3: Which index is used by RBI to decide repo rate and measure inflation? GDP, CPI, IIP, WPI. Our answer of CPI. Full from the CPI कौन? The wholesale price index was the main index for measurement of inflation in India till April 2000
when RBI adopt a new consumer price index মানে CPI মানে consumer price index combined as the key measure of the inflation. The CPI calculates the difference in the price of the commodity and services such as goods, medical care, education, electronics, etc., which Indian consumer buy for use. Question number 4. Who act as banker to the Indian government? International Monetary Fund, Reserve Bank of India, World Bank, State Bank of India. So ଆପଣଙ୍କର B, Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India (RBI) acts as the banker to the government of India. The RBI is known as the Bankers Bank. Question number 5. Which department is the nodal department for overseeing the public finance management system in the central government of India? Department of Expenditure, Department of Revenue, Financial Services, or Economics Affairs? Answer ଆପଣଙ୍କର A. Department of Expenditure. The Department of Expenditure is the nodal department for overseeing the public financial management system in the central government and matters connected with state finances. Okay. Question number 6. Which of the following monetary policy tool is used by RBI to control inflation? Physical drug, permissionless measurement, repo rate, or physical boost? Answer ଆପଣଙ୍କର C. repo rate. The Reserve Bank of India RBI use repo rate, reserve repo rate such as cash reserve ratio (CRR) and statutory liquid ratio (SLR) to control inflation. These all are quantitative tools used in RBI's monetary policy. Question number 7. If RBI increases repo rate, when that may be its impact on the Indian economy? Inflation will reduce, inflation will increase, reverse repo rate will decrease, credit will be cheaper. Answer ଆପଣଙ୍କର A. Inflation will reduce. When the RBI increases the repo rate, it generally leads to shut down the economic activity as borrowing becomes more expensive for banks, causing them to raise interest rate on loans for individuals and businesses, which can dictate spending and investment, ultimately helping to control inflation by reducing the money supply in the economy. However, this can also impact economic growth negatively. Okay. Question number 8. How many members are there in Indian monetary policy? 6, 5, 21, or 3? Answer ଆପଣଙ୍କର 6. Okay, there are 6 members in the RBI Monetary Policy Committee (MPC), which there are formed RBI, and 3 are appointed by the central government. The members of the Monetary Policy Committee appointed by the central government shall hold office for a period of 4 years. Okay. Question number 9. In the older monetary system of India, 1 anna used to be what part of the 1 rupee? 16th part of a rupee, 20, 10th, or 6th part of a rupee? Answer ଆପଣଙ୍କର A. 16th part of a rupee. In the older monetary system of India, 1 anna used to be 16th part of a rupee or part of 1 rupee. Okay. Question number 10. Which of the following is a nationalized bank in India? Axis Bank, State Bank of India, ICICI Bank, or Yes Bank? Answer ଆପଣଙ୍କର B. State Bank of India. Okay. The State Bank of India is a nationalized bank. Which among the following is not one of the following 4 main factors of production? Land, labor, expenditure, entrepreneurship? Answer ଆପଣଙ୍କର C. Expenditure. Economists divided factors of production into 4 categories: land, labor, capital, and entrepreneurship. So expenditure is not one of the factor of the production. Okay. Question number 12. What does the Lorenz curve indicate? Relationship between the price of a certain commodity and its demand, income distribution, rate of employment, taxable income, elasticity. Answer ଆପଣଙ୍କର B. Income distribution. Okay. The Lorenz curve indicates income distribution. It is a graphical representation of the distribution of the wealth or of income. It was developed by the 1905 by Max O. Lorenz to represent inequality of the wealth distribution. Question number 13. What is the name of the given to the graph that shows the old combination of 2 commodity
that a consumer can afford at given market prices and within the particular income level. In economic terms, demand curve, ISO cost line, supply curve or budget line सब आपनकर डी बजेट लाइन या देखुछन बजेट लाइन एटा होचे आपनकर लॉरेंस कर्व रे गोटे पार्ट budget constraint. So all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market price within the particular income level. Okay. Question number 14. Which economist gave the theory of opportunity cost? Milton, Friedman, Adam Smith, Jenkins, Gottfried Haberler. Answer आपनकर D. Gottfried Haberler. The Australian American economist Gottfried Haberler 1905 developed the theory of opportunity cost in 1936. Okay. Question number 15. When the output is equal to 0, the variable cost is constant, 0, minimum or maximum. Answer आपनकर B 0. Okay. The variable cost is equal to total quantity of output into variable cost per unit. If the output is equal to 0, when the variable cost is equal to 0, total cost is equal to variable cost plus fixed cost. Question number 16. What is the value of all tangible resources such as raw material and labor that are used in the production process called? Real cost, variable cost, opportunity cost, fixed cost. Answer आपनकर real cost. The value of all tangible resources such as raw materials and labor that are used in the production process is called real cost. Question number 17. A marketplace in which final goods or services is bought and sold is called equity market, factor market, commodity market, production market. So आपनकर product market. A marketplace in which final goods or services is bought and sold is called product market. Question number 18. A market structure which is dominated by only a small number of firms is called perfect competition, monopoly, oligopoly, then monopolistic competition. Answer of C, oligopoly. Oligopoly is a market structure with a small number of firms, none of which can keep the other firms having a significant influence. Question number 19. In economics, buying an asset is one market and simultaneously selling an identical asset in another market at a higher price is termed as dash. Depreciation, mortgage, arbitrage, devaluation. Answer upon C, arbitrage. Okay. In economics, buying an asset is one market and simultaneously selling an identical asset in another market at a higher price is termed as arbitrage. Okay. Question number 13. The dash shows all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market price and within the particular income level. Utility line, supply line, demand line, budget line. Answer आपनकर D, budget line. The demand line shows all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market prices and within the particular income level. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोथे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण एटा जदि आपण माने जदि OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मानको हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु काइना एमिति कंटेंट आपनको बहुत
बहुत आपको फ्री रे मिलूची। चलू देखा ये बही गोटे भल जिन कौन अच्छे ना मेरिट बुस्टर कंटेंट से बनई प्रिपेयर कर जो टपर एजुकेटर आपर एसे भल जिन कौन ना टाइम सेविंग और रिविजन बहुत भल भाव हो पार सहित आपको बार बार आउ कि मेटेरियल किना पड़ोनी गोटे बही सब जिन भल अच्छे ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स 4टा फीचर इम्पोर्टेंट कह गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाव में अच्छी जमी आप गोटे जहाँ गोटे इमेज रहा बहुत भल भाव से दर्शे आकुरेट फैक्ट्स अच्छी माने कौन पर केमती कौन आसला कौन पर केमती कौन आसला से बहुत भल भाव देती एग्जाम हॉल डिमांड कौन जो जिनस रखी से एग्जाम हॉल ये जिन बहुत थर पड़ी से गोटे सूची देते तो बार बार रिविजन करार अच्छी मेमोरी बुस्टर माने आपणकर ये जो गोटे मनकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले से कौन कौन पॉइंट इंपोर्टेंट बहुत जिन बाहर हमको मन रखा पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी सहित आप ओएसएससी सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देते तेणु ये जिन 10th क्लास स्टैंडर्ड देते किंतु जो मैंने क्वेश्चन सेटअप करेंगे से एक्चुअली टे प्रोफेसर लेवल था उत्कल यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी आपणकर बीजेपी कॉलेज एगुड़ा टे लेवल से लेक्चर मैंने बनाती है तेणु से मन को जहाँ आसो से क्वेश्चन बनइबे न कि देखिए 10th स्टैंडर्ड कौन आसो बोली है तेणु से बहुत जिन पचारि पाते क्वेश्चन तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गले आप 34टा चैप्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जब कहले 92 पेज टोटाल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जमी सिलेबस आपंकर सेकेंड कह गले आपंकर कौन ना मुझे को एक कंटेंट बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देछि है जमी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देछि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देछि एनिमल हजबेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देछि कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाइए एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाइए ओडिशा बेसिक इनफॉरमेशन पढ़ी देछि आ जेतिकी बाकी रहा कि चैप्टर सेटा सब पेड अच्छी माने कह गले सब जाक चैप्टर गुड़ा पाखापी 20 ରୁ 25 मिनट कि 40 मिनट भितर बहुत चेष्टा कराई पूरा डिटेल बुझे सारी मैंने देखो ये पूरा आप जो देखिए टोटाल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो माने 15 घंटे आप पूरा चैप्टर सरीज आप पूरा मास्टर हो ओडिशा जिले कौन भी आप गोटे मार्क कटोनी है कहीं एत डिटेल से बरे डिटेल देछि सब जिन पैक्स देछि सेकंड कथा करना आम पाखे सब चैप्टर वीडियो अवेलेबल अच्छी है तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किसी पेड सर्विस भी आम रखीचु देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँगी आप 50% आपन को एडवांस आपणकर ए रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे समरी नोट माने आप चैप्टर सर जो दिन वीडियो देखिले अपने संगे संगे आप समरी नोट मिल जाए पढ़ीदेवे आप किसी पढ़ा दरकार नहीं डेली 12टा एमसीक्यू 35 डेज माने 420टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पड़ुची परीक्षा से लेवल क्वेश्चन आम दौचु ओडिशा 360 डिग्री इ बुक गोटे फ्री आपको दौचु है सब जिन रही जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कह 50 रुपीज पर डेटा फ्री पोस्ट मिलूँ 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे आम आपको अपलोड कर दौचु सेटा प्राइवेट रहिबो आपनको जो माने एटा परचेज करिवे सेही मानको मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मानको मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नहीं तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपको क्विज डिस्कशन करा जिवो आपनको टोटल प्राइस होची 35 टंका है 35 टंका माने गोटे छोट छुआ अफोर्ड कर एमती बहुत बड़ जिन नुह सेकेंड कथा 35 टंका नहीं मुझे बहुत बड़ लोक होनी कहीं एति परिश्रम करा पड़ू से बहीटा फोटो उठाई पीडीएफ बना पीडीएफ बना पाले विभिन्न सफ्टवेयर यूज करके बुझेब जड़े है बाकी रहा आप बुझे सारापर आपको क्विज दब एत जिन जन करुच्ची है तेनाली भावतु आप भावी नि 35 चैप्टर आपको जदि आप मिलगला आप वीडियो मिलगला तो गोटे वीडियो प्राइस के पड़ा टंकाटे पड़ा टंकाटे तो आप अपलोड करेंगे है तेणु मुझे बहुत जिन कहूनी है देखो ये आपंकर पाखापाखि जोटा मुझे 7 घंटार वीडियो छाड़ी बहुत गुड़िए फ्री चैप्टर भी अच्छी
पेड चैप्टर भी अच्छे जो मैंने नहीं पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख पार्टी है आउ आपण मैंने जो चाहिए निश्चित भाव एटा को एक्सेस करें मात्र 35 टंका आपण भावतुन जे एटा आपण कले ओएसएससी जिले काम रे आसीबो अपकमिंग जिति रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित भाव पड़िबो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले म्हणजे आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होस तनो 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करी मते 8993719011 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला परे आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज रा वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच Which of the following items is the major reason for the WPI based high inflation in India? Primary goods, fuel and electricity, manufacturing product. None of the above answer apanangar C. Manufacturing product. In India, three groups of the commodity have major contribution in the calculation of the inflation. In this primary product contribute 20.1%. Fuel and electricity 14.9% and the manufacturing product contribute 65%. Therefore, the biggest reason for the highest inflation in India is manufacturing products. Question number 2. Which of the following is not a qualitative control of the credit by the central bank of a country? Rotationing of credit, regulation of the consumer credit, variation in margin requirements, regulation of margin requirements. Answer apan C. The variation in margin requirements. Methods of credit control. There are two methods that the Reserve Bank of use to control the money supply in the economy: publicity, then quantitative method. Question number 3. If marginal return increase at a decreasing rate, then total returns increasing, decreasing remains constant, income becomes. Answer upon be decreasing. The question talks about the increasing marginal return at a decreasing rate, which is actually a diminishing marginal return. In economics, the law of the diminishing return states if increasing amount of a variable factor are applied to a fixed amount of other factor per unit of time, the increase in total output will increase at first, but beyond a point, it will, according to the Richard A. Blias law of diminishing return. If investment of one resource is kept constant, the resulting increase in output will become smaller and smaller beyond a point. So, as a marginal return increasing at a decreasing rate, total return will be eventually decreased. Question number 4. RRB is owned by central government, state government, sponsored bank, jointly by all the above. Answer आपको jointly by all of the above. Okay. According to the Act, RRB are owned by the central government 50%, state government 15%, and sponsored by 35%. RRBI has no ownership of the RRBs. Okay. Question number 5. Which scheme of the government India makes Indian cities free from slums? Indira Awas Yojana, Central Rural Sanitation Program MME, Rajiv Awas Yojana, Antodoyo. Answer apan C. Rajiv Awas Yojana. Okay. Rajiv Awas Yojana has been launched to create a slum-free India, whose main objective is to ensure availability of proper shelter with basic infrastructure and social facility to the every citizen. Question number 6. Excessive use of resources is called a tragedy of the commons was pronounced by Garrett Hardin, Seligman, Adolf Wanger, A.P. Lemierre. आंसर आपनकर ए गैरेट हार्डिन कौन लिखिछन से इन 1968 biologist Garrett Hardin proposed a theory called the tragedy of the commons in which he argued that the finite resources such as forest, fishery, clean air and clean water that are commonly used inevitably by wasted unless will go as long as their use is unregulated. Question number 7. Which of the following sector has the highest arithmetic weightage mean in the industrial production index? Steel, refinery products, coal or cement. So, B. Refinery products.
The arithmetic weighted mean of a petroleum refinery production is the highest 28.04% among the 8 major sectors of the economy. The arithmetic weighted mean of the 8 major industries included in the industrial production index is 40.27. Question number 8. Which country is currently standing largest share of FDI inflows to India? Singapore, Mauritius, USA, China. Answer आपन Singapore. आज हम data from the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) other sources, Singapore is the current largest source of FDI flows to India. Question number 9. Which of the following method is not used in the determining the national income of a country? Income method, output method, input method, investment method. Question number D. Answer investment method. Investment method is not used in the determining national income of the country. Question number 10. What is the base year for calculating national income in India? 2004-5, 2009-10, 2014-15, 2011-12. Answer upon D 2011-12. The base year for calculating national income, especially gross domestic product or GDP in India, is currently 2011-12, but the government is planning to update it 2022 to 23. 11. The social accounting system in India is classified into assets, liabilities and debt position, public sector, private sector and joint sector, income, production, expenditure, enterprise, household and government. Answer आपन see income, production and expenditure. Okay. The social accounting system in India classified into income, production and expenditure. Social accounting, also known as social accounting and the auditing, social accountability, social and environmental accounting, corporate social reporting, corporate social responsibility reporting, non-financial reporting or accounting. It is the process of the communicating the social and environmental effect of organizations. Question number 12. The production of a commodity mostly through the natural process is an activity of primary sector, secondary sector, tertiary sector, technology sector. Answer of primary sector. The production of a commodity mostly through the natural process is an activity of primary sector. For example, agriculture and agricultural product, fertilizer, animal husbandry, etc. Question number 13. Rent is a cost paid for land, restaurant, building or factory. Answer land. Okay. Rent is a cost paid for land as wages and interest are paid for labor and capital respectively. Question number 14. The surplus earned by a factor or thus land in the short period is referred as economic rent, net rent, quasi rent or supernormal rate. Answer आपन C quasi rent. कौन quasi rent? The surplus earned by the factor other than land is the short period is referred as quasi rent. Okay. Question number 15. Labor intensive technique would get chosen in labor surplus economy, capital surplus economy, developed economy, developing economy. Answer आपन labor surplus economy. Labor intensive technique will be chosen in a labor surplus economy because in such economy labor cost is low. Question number 16. Amartya Sen was awarded Nobel Prize for his contribution to monetary economics, welfare economics, electrometrics, development economics. Question both rare question. It both are पढ़ी किंतु पिलाମାନେ ଜାଣି नथांदे. Question answer about B welfare economics. For welfare economics and social choice theory, Amartya Sen in 1998 was awarded the Nobel Prize. Welfare economy is a branch of economy that uses microeconomic techniques to evaluate well-being, welfare at the aggregate economic wide level. Thus, the field of the welfare economy is associated with two fundamental theorems. Okay. Question number 17. Where is the headquarters of the Food and Agriculture Organization located? Rome, Geneva, Paris, none of the above. Answer of apankara A. Rome. General information in additional to its headquarters in Rome, Italy, FAO has extensive decentralized network of regional, sub-regional, country and liaison offices.
Question 18. In which year Kisan Credit Card Scheme was launched? 1990, 50, 98 or 2000? এটা बहुत थोड़ा क्वेश्चन परीक्षा पड़े आंसर आपनकर C 1998. Kisan Credit Card KCC scheme was introduced in 1919 for issue of Kisan Credit Card for farmers on the basis of their holding for uniform adoption by the banks, so that farmers may use them to readily purchase agriculture inputs such as seeds, fertilizer, pesticide, etc. and draw cash for their production needs. Okay. Question number 19. Business comes under trade and industry. Only trade, commerce and industry. Trade, commerce and industry. Answer of आपनकर D. Trade, commerce and industry. Okay. Question number 20. Last question. When was the first agriculture census conducted? 1948, 90, 76 or 70? Answer of आपनकर D. 1970. The Department of Agriculture and Farmer Welfare began organizing agricultural census in India in 1970-71, with the first census concluded with reference year 1970 and 71. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोथे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण को पई। एटा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मान को हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब कर नियंतु, काइना एमिटी कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो तो देखिबा ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना, मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै चंदी, प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना, टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे परछि। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल किना पड़िबोनी, गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स, चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाव में अच्छी। जमती आप गोटे जहाँ गोटे इमेज रहा बहुत भल भाव से दर्शे आकुरेट फैक्ट्स अच्छी, माने कौन पर केमती कौन आसला, कौन पर केमती कौन आसला से बहुत भल भाव देइछंती। एग्जाम हॉल डिमांड कौन जो जिनस रखी सेठी एग्जाम हॉल ए जिनस बहुत थर पड़ी से माने गोटे सूची देइछन, तथा हम बार बार तक रिवीजन करिवार अछि। तबरे मेमोरी बूस्टर माने आपनकर ए जो गोटे मानकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले सेतेरे कौन कौन पॉइंट बहुत जिन बाहर ताको हमको मन रखे पड़ो, लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से मैंने करछंदी। तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी। ता सहित आपण OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछंदी। तेणु ए जिंस हम 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछंदी, किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल थांती हला, से माने उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, आपणकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला। तेणु से मानकर मुंड को जहाँ आसो से क्वेश्चन बनइबे, न कि से देखिए 10th स्टैंडर्ड कौन आसो बोली हला। तेणु से बहुत जिन पचारि पाते क्वेश्चन। तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गले आप 34टा चैप्टर है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जब कहले 92 पेज टोटल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी। आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जमी सिलेबस आपंकर देइछि हला। सेकंड कहया को गले आपंकर कोन ना, मु आपन को एक कंटेंट रो बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देछि हला। जेंति मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देछि, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देछि, एनिमल हस्बेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देछि, कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई छि, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाई छि, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाई छि, एवं ओडिशा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़े देछि। आ जेति कि बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड रे अछि, माने कया गले सब जाक चैप्टर उडा पाखाबे 20 ରୁ 25 मिनिट कि 40 मिनिट भीतर बहुत चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारची माने हला। देखंदो एटी पूरा आपण जो देखिबे टोटल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो, माने 15 घंटा रे आपण को पूरा चैप्टर सर जीव, आपण पूरा मास्टर हे जिवे ओडिसा जिकरे कोनसी भी आपण को गोटे मार्क कटिबनी हला। काहे ना एते डिटेल से बरे डिटेल देछि, सब जिंस पैक्सा देछि। सेकंड कथा करना हम पाखरे सब चैप्टर रो वीडियो अवेलेबल अछि हला। तेणु आमे कौन कर किसी फ्री सर्विस भी देचु, किसी पेड सर्विस भी आमे रखिचु।
देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँ आप 50% आपन को एडवांस आपणकर ए रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे समरी नोट माने अपन चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले अपन संगे संगे अपन समरी नोट मिल जिवो ताको पढि देबे अपन बेस किछ पढिया दरकार नै डेली 12 टाइम सीक्यू 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढुची परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोचु ओडिशा 360 डिग्री ई बुक गोटे फ्री अपन दोचु हला सेते आपनकर सेते सब जिंस रहिची जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस बट एटा फ्री कॉस्ट मिलुची 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे हम आपन को अपलोड कर दोचु सेटा प्राइवेट रहइबो आपन को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नाही तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपन को मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका हला 35 टंका माने गोटे छोट छुआ मध्ये एटा अफोर्ड करि परिबो एमिति बहुत बड़ जिंस नो सेकंड कथा 35 टंका नै कि मु बहुत बड़ लोक हो जिबिनी काने एति परिश्रम करिया पडुचे से बईटा फोटो उठाई हला पर तापर ताको पीडीएफ बना जिवो पीडीएफ बना पले विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करिके ताको बुझेबो जणे हला तापर बाकी रहला त आपण बुझी साइला पर आपण को क्विज दबो एते जिंस जणा करूची हला त भाबंतु आपण भाबिनो तो 35 चैप्टर रो आपण को जति आपण मिली गला आपण वीडियो मिली गला त गोटे वीडियो रो प्राइस केते पइला टंका तो आपण अपलोड कर परिबे हला तनो मु बहुत जिंस किसी कोनी हला देखंतो एठी आपनकर पका पके जोडा मो 7 घंटा वीडियो जडी से बहुत गुडी फ्री चैप्टर भी अछि पेड चैप्टर भी अछि जो माने नै छै से माने पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख परचंदी हला आ आपण मान जो चाहेबे निश्चित भाबे एटा को एक्सेस करि परिबे मात्र 35 टंका आपण भाबंतुन जे एटा आपण गले ओएसएससी जिले काम रे आसीबो अपकमिंग जति रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित भाबे पड़िबो 35 टंका इज नॉट अ वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले मोंडा आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होस तनो 35 टंका इज नॉट अ बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करि मते 8993719011 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला परे आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज रा वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणिबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच।